Very good afternoon to one and all. A warm welcome to all the students and participants present here today. I, on behalf of Lovely Professional University, would like to welcome you all to this masterclass on achieving balance, a practical guide to exam preparedness. Exams are not just a test of knowledge, they are a test of balance, a test of focus, and a test of emotional stability. And in today's fast paced academic environment, learning how to study, how to manage stress, and how to maintain a healthy routine becomes just as important as the syllabus itself. So, to guide you through this meaningful journey, we are honored to have amongst us Ms. Damini Tiwari, counseling psychologist in the Department of Counseling and Happiness at Lovely Professional University. Ms. Damini has been instrumental in helping countless students build resilience, manage academic pressures, and develop effective study habits that create long term success. Her expertise, warmth, and practical methods promise to make today's session deeply insightful and empowering. I would like to thank Damini ma'am and would like to give a cordial welcome to her for taking out the time to share her knowledge and expertise with us. Welcome, ma'am, to the session. I also extend a warm welcome to all the learners who have joined this masterclass with a meaning, with willingness to grow, reflect, and prepare smarter for the upcoming exams. I'm sure today's session will equip you with strategies that not only improve your academic performance, but also enhance your overall well being. I also take the opportunity to mention the presence of uh, Honorable Ms. Kini Nijavan, Additional Director, CDOE, Mr. Manish Kumar, uh, Director, Deputy Director for the Center for Distance and Online Education, and all the dignitaries who are joining us for today's session. With that, let's begin the valuable and interactive session. So, all our young budding learners, please join me in welcoming Miss Damini Tiwari. Welcome, ma'am, to the session. And I hope today's session would be insightful and would be eye-opening session for all the learners over here. Welcome, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Am I audible? Yeah, ma'am, you're audible. I would just take another moment to Yes, sir. mention that the attendance sheets shall be shared in the public chat. I would request all the learners to kindly mark their attendance and then enjoy the session. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Hello, good afternoon, everybody. It's really good to see you all here. I've seen if everybody's been too uh, enthusiastic for this webinar, and you people were here on time. So, so shall we start? Am I audible to everyone? You can drop a message in the chat box. Am I audible? Yes. Okay, 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 okay. Okay, thank you so much. So we'll be okay. So for this webinar, I just want that this is not more of a lecture, right? That I'm coming here and I'm telling you that you have to do this and you have to do that. It should be an interactive one, and it's not about seeing that what other people are saying. In this whole webinar, I just want that whenever we are talking, if you have any points in your mind, and if I'm asking something, so you can just drop in the chat box, that I'll be coming back to the chat box and we'll be discussing certain things, because I think that you people know everything, right? It's just this webinar is a reminder that we have to do certain things, because in this fast paced life, the reminders are very important. So
We'll start. I'll share. Just give me a moment. Okay, so is the PPT visible? Is the PPT visible to you? Yes. Okay then. Right. So, first of all, the topic name is Achieving Balance, a Practical Guide to Exam Preparedness. So, we'll be talking about that how can we achieve balance, because in today's day we are juggling from so many things, from one thing to another, and we'll be talking that how can we achieve that balance. So, before that, this is the content of the workshop, that what we'll be doing. So, basically, we'll be working in general also, that if there are exams, then how can we deal with that. And if you are doing a distance course or an online course, so it is for that also. We'll be talking about there are some myths, right? This is a mix of the regular students we are doing and the online and the distance one, that what challenges they do face, then how do we manage the multiple roles, emotional and mental challenges which comes, time management, and some smart study strategies we'll be talking about. And what is a burnout, we'll be talking about the burnout also. Before that, I just want to ask you one question, that how are you feeling? As you know, I am a counseling psychologist. It's very important for me to know that how you are feeling. So you just drop a emoji, or you can write it down, that are you feeling good, okay, tired, or overwhelmed. So what are you feeling? Just write in the chat box that how you are feeling. Oh, tired and stressed. Okay, happy, tired, good. Oh, some are sad also. No worries. We'll take care of that. Okay, stressed, stressed. Overwhelmed about this session. Okay, neutral, stressed but happy also, tired as coming back from office. Okay, confused. Okay, good. Okay, so I've seen there are two responses which I've seen. The one is the happy one or the good one, and there are some people who are very tired. No worries, people who are good will maintain that, and people who are feeling stressed and confused or anxious, we are going to take care of that, right? We'll be starting the session, and I hope that in the end of the session you have certain amount of confidence that you can do it. So we'll be talking about that. Okay, and about me, I am feeling very good and energized. I was looking looking through that, okay, this about this webinar, so I'm really happy. So now we are going to start. Confused of what to read. Okay, no worries, we'll work on that. Okay, so let's start. The very first thing in which we need to work is, I just want to ask that are we having a mix group, that you are doing a distance or online course, or you are doing a regular one? Online, 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 online. Okay.
Okay, all right. So now I'll be going back to the PPT. Okay, so now first of all, we are going to talk about that there are some myths about online and distance students. We need to work on that. We need to first of all see that whenever we are doing a distance course on an online course, it is little bit different than the regular one, right? Because the very first myth, it is like you can also say that I believe in that myth, and there are certain things that people around us वो हमें बोल देते हैं कि अरे यार डिस्टेंस में कर लो, घर बैठे बैठे डिग्री हो जाती है. So these things do leave an impact on you. And now why we are talking about myths, because these myths are very important. These are the roots of our thoughts about our studies, about our course. So the very first one is that distance learning is easier, right? And people usually say this thing to us, and इससे हमें लगता है कि even if when we are not able to study well, so we feel that people around us, they feel that this is very easy. Then how come I'm not able to do it? But the distance learning, the online courses we are doing, it is very important, as it wants discipline. It also needs a lot of time management, internal motivation, planning, and emotional regulation, self monitoring, because in this you become the planner, teacher, student, everything, right? So you become that. Okay. Okay. So yes. So this is the thing, but we need to see that it is this is a myth only, because distance learning or the online learning, it takes a lot of effort, it takes a lot of planning, right? And we have to juggle between so many things. So it is not that easy, right? So you have to see, this webinar is for you, that you should first understand that whatever the myths are going around, we need to be very, very clear about these things, right? So this also requires a lot of patience, a lot of time management and discipline. Okay, so there have been some people who keep on saying that online courses are easy, or ये तो हो जाएगा आराम से. People do say these things to you. Yes. Okay. So the next one is I must study for long hours to score well. The thing is that the brain only have that thing that we have to focus. It's not about how many hours you study. It's about how much focus you have. Because this distance learning is only for the students, right? Because this not only the online students, right? It is for the all students, that we feel that if we want to have good marks in some subject, we have to study for the long hours. But psychologically, it is psychologically proven. There is a um, whole experiments done on that. So many papers are published on this, that our memory, our focus, attention, concentration is only for 30 minutes, 25 to 30 minutes. You must have seen that after 30 or 40 minutes there is a break, even in the lectures, right? Because our brain cannot comprehend more than 40 minutes, 30 minutes or 40 minutes. And if you see that, if we go for an entertainment purpose also, if we go for a movie, at that time also there is a interval in between, because our brain needs little bit of rest in between to maintain the focus and the concentration, right? The next myth is that I am behind because others have more time. Now this is very common. We all see every time that people do say that उसके पास ज्यादा टाइम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं है, इसी की वजह से वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, या फिर मेरे पास कम टाइम है तो नहीं हो पा रहा है, right? We need to understand in this, there is a concept called as individuality. Everyone is different. Maybe somebody is having 10 responsibilities and somebody is having 5 responsibilities or 2 responsibilities. Everybody has a different life. We can't compare, right? So the success doesn't depend that how much time you are having. It depends upon being consistent.
And by consistent doesn't mean the other myth that we have to study for the long hours. We just have to be consistent by, delivering 10 minutes, 20 minutes every single day, right? The fourth one, online learning is lonely. No one can help me. So do you feel this, that online learning is lonely? Yes. Okay. Can anybody tell me why it is lonely? Sometimes, okay. Feels isolated. Okay. First time. Okay. 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 So, about this one also, I've been hearing this one also, that online learning is lonely, but in today's world there is so much of technology. You can make a group of people, or you can find it on the Telegram, and there are so many things. And obviously your people also, you can have a group in which, you can go. There is YouTube lectures on YouTube available. You can go there. If you feel lonely, then you can take some help. And even if you feel that there is somebody around you who is studying something else, only no worries. You just, sometimes we need that environment, right? So you can create that environment. It is very important. The fifth one is, I need a perfect study environment to start studying. Now this one is very common. Even if you're not doing an online course, even if you are a student in school or college, you also feel that, I need a perfect environment for studying. So what is that perfect study environment? What do you think? What is that? Okay, helping each other, maybe silence around. It depends upon the mindset. Group studies, no noise around. Okay. Okay. So because of this one myth, there is one major problem which arises, that is called as procrastination. Because when you wait for the perfect time, perfect environment, you tend to so what do we do for that perfect thing? We wait and we try to just push that thing ago and ago and ago, right? So we don't have to focus on the perfect time. Our brain is very much active. It can adapt anytime, whatever the condition it is. There are people who keep on saying that कि पढ़ने जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं पे भी पढ़ लेते हैं. So these things, our parents say कि जिसने पढ़ना होता है वो कहीं पे भी पढ़ लेता है. It is important, no doubt. ऐसा भी नहीं है that you have to go into a room जहाँ पे इतनी सारी आवाज हो वहां जाके पढ़ना है. ऐसा भी नहीं है. But yes, you need to adapt. Our brain can adapt slowly and gradually. You'll see that whenever we have a exam in school also, no? Whenever we used to have an exam, and before the exam used to start, every student was in a hall. वो एक पूरे हॉल में होते हैं. वी कीप ऑन रिवाइजिंग दिस स्टफ, दैट अभी हमने क्या पढ़ना है, क्या करना है. उस टाइम पे व्हाट आर वी डूइंग, हमें पता है कि हम अपनी क्लास से दूर नहीं जा सकते, है ना. हमें वहीं पे बैठ के पढ़ना है, और इतना शोर होता है, हम फिर भी वहां पे मन लगा कर पढ़ते हैं. वो क्या कर रहा है, जो हमारा ब्रेन है वो अडेप्ट कर रहा है. बिकॉज एट दैट टाइम नीड ऑफ द आर इज द रिविजन, नॉट अबाउट thinking of perfect environment, perfect time, right? So we need to work on that, because of this myth, procrastination is increasing day by day. Now the next one is, if I miss a few days, it is impossible to get back on track. Now, because of this myth, one problem arises, that is lack of consistency. People keep on telling us, the students also, कि मैम consistent नहीं हो पाते हम लोग. Now can anybody tell me that what do you think consistent होना किसे कहते हैं? What is being consistent called as?
Being regular, daily showing up, being regular. Okay, doing the same thing every day. Okay. Okay. Now, like everybody is saying that being consistent mean doing same thing every day, right? Now we have seen, who is the most consistent person if we look around? People who go to the gym. है ना, they keep on saying that हम तो एक भी दिन miss नहीं करते हैं, we keep on going, we keep on going. So every day doing certain thing without a break is called as consistence. But here if we'll see that even the people who go to the gym on Sunday, that's a day off for them. On Monday, they are going, right? So every day when you are doing certain things, that is called as being disciplined. That is discipline that you are following. A timetable you have made, which what you are doing. Actual consistency is when on Saturday a person is going to the gym, on Sunday it's a day off. Again, when he is going to the gym on Monday, that is called as being consistent. That even if there is a small breakage in that discipline, the person is continuing that again. That is called as being consistent. And by consistent means sometimes there will be up, sometimes there will be lows. It's just that you just keep going, right? So even if you miss few days, it is totally fine. That doesn't mean कि आप लोगों ने एक अपने से promise करा था, वो promise टूट गया. We do feel really bad जब हमने एक टाइम टेबल सेट करा होता है. We feel really bad. और यूजुअली ये हम कब करते हैं? At night when we are sleeping. जब हमने एक दिन का कुछ we have made a timetable that we'll be doing these things, but when we are not able to, at night when we sleep, the guilt cycle repeats. And at that time, during that sleep, we try to think that we will overachieve, that we'll try to achieve more for the next day. So we अगला दिन आया भी नहीं होता है और हम पहले से ही हमने इतना कुछ अपनी टू डू लिस्ट में डाल लिया होता है, right? So you just need to be really patient in this. Even if you miss certain days, it's okay, right? This is a flexible thing which we need to do. If you think that you are not able to make or follow everyday task, right? So what we have to do, we have to make weekly plans. If you think that every day you have to give 1 hour to your studies, right? So you should not think more about that. Monday ko I'll give 1 hour, Tuesday ko I'll give 1 hour. It is that in a week you need to give 7 hours. Now that 7 hours, maybe you can sit in one day and you can give 7 hours. Maybe in 4 days you can give 7 hours. We need to be really flexible in this, right? So these are the myths, and we have told that what are the things, if we'll focus more on those myths, so what problems may arise. Any question or any doubt in this one? Okay, so are we clear about being consistent and being in a discipline, that हमें क्या करना है? Okay. Okay, now the next thing we'll be talking about is real challenges, uh, what people go through. The very first challenge is the evening crash. It happens a lot that obviously when we are back from our work, है ना, every पूरा दिन हम लोग वहां पे अपना काम करते हैं. So many things are going on, and even when we are doing our job, we think about is going back and studying. So that mental fatigue is always there, right? So the what is mental fatigue? It's just that so many things are going on, and obviously whenever the thoughts are coming, even if you're working, you're doing anything, the mental fatigues come with the thoughts. So when, for example, even if you are working with your boss,
So many emotions are involved. You're stressed, you're happy, they gave you appreciation, you're happy, they gave you more work, you're stressed about this, how I'm going to do this. So that mental fatigue is there, right? Now example is that coming home after work and feeling blank. There is a time, when you go back home and you sit and you think that, okay, now what to do, I have no energy at all. So that mental fatigue is there. At the same point, information overload is there, decision fatigue is there. You must have seen that whenever you have that blank feeling, when you're sitting on your bed and you're thinking that what today was, what you did, and there is a decision fatigue in you, that should I study today or should I not study? Should I just focus on rest today, study tomorrow? So the decision fatigue also comes in that. So what we have to do after this, that mental fatigue is there, right? Our brain is mentally drained. We are not able to do anything. So now, even after every challenge, I'll be telling about that how we need to work on that. So now the evening energy crash, what we have to do, we have to just work on one thing, that is mental fatigue. Now you have to see that what one thing gives you immense happiness. For example, I'll give you my example, that if I'll go home and I water my plants, I'll do the gardening. I know that in those 10 minutes, I'll feel very fresh. At that time, I'll not think about my studies. I'll not think about what I have done. I'll just focus on that. I'll be mindful. So you have to see. So what is that one thing which makes you feel refreshed? Just write it on the chat box, that what makes you feel happy or relaxed. Reading novels, okay. Sketching and reading, having time with my family. Okay, okay. See, now this is the thing what we need to do. When we are coming back from work, it is very important for us to deal with that mental fatigue. So how we need to work on that? Like people are saying that gardening, music, spending time with family. So without even when you're entering your house, right? Never think about I have to study, I have to do this, I have to do that, because what you are doing, you're already very much information is loaded, too much work is there, राइट सो क्या करना है? सबसे पहले तो किसी ने बोला है माइंड फ्रेश करने में ही खत्म हो जाता है टाइम। नहीं, इतना भी नहीं, मतलब कि हमें वी हैव टू सेट सर्टेन बाउंड्रीज, राइट? यही यहीं पे अब हम सीखेंगे कि हमें बाउंड्रीज को कैसे सेट करना है यहाँ पे। नाउ द फोकस इज दैट व्हेन यू आर कमिंग बैक होम, फॉर एग्जांपल इफ एट 5 आई एम गोइंग होम, I should have a time from like 5 to 6:30. I'll say that in this time at 5:30 I'll reach home. From 5:30 to 6:30 I'll not think about क्या हुआ आज पूरे दिन में. I'll not think about 6:30 के बाद क्या होगा, right? I've given you 1 hour का slot. उसमें you can have 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, not more than 1 hour, because other things are also piling up, right? घर पे हमारे और भी household work होंगे, right? So what we need to work on is that we need to work on that mental fatigue. उसके लिए क्या है, जो हुआ उसे हमें we have to keep it aside, and जो हमें करना है उसको भी we have to just put a stop on that. We need to work on that mental fatigue. And mental fatigue कैसे कम होगी? जब हम mentally अपने आप को हर एक pressure से थोड़ा सा दूर करेंगे. So that is very important for us, right? Now, the next real challenge is the guilt of not studying enough. Now, this is a very common challenge in everything. जो हम स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी थे, अभी भी हमें ये लगता है the guilt of not studying enough. Now, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आती है? Exhaustion versus laziness. राइट? अभी एग्जॉशन क्या है?
अभी हम लोगों को एक ये चीज भी देखनी है यहाँ पे, दैट व्हाट हैपन्स कि हम लोग कंफ्यूज करते हैं टायर्डनेस को लेजीनेस के साथ. What you need to do, you need to sit and you need to ask yourself this question. Next time you are feeling that you are not studying, you're wasting your time, we always say we are wasting your time, ask yourself a question that I am tired or I am being lazy. And trust me, we have the response. We know that when we are procrastinating and when we are actually tired, because you know your body, right? At what time, what happens when you are tired and you label yourself that I am being lazy, what happens? The guilt circle starts. Now, what happens when guilt is there? From guilt, what comes? Anxiety. When anxiety comes, what do? We need to avoid the anxiety. So we try to suppress. We try to avoid that thing. Why? Because वो जो guilt है, वो anxiety लेकर आ रहा है, right? And उस anxiety को कम करने के लिए हम उस चीज को avoid करने लग जाते हैं जो चीज anxiety जिसकी वजह से हो रही है. Now, उससे क्या होता है? More guilt. हम एक साइकिल में घूमने लग जाते हैं. वी आर स्टक इन लूप, राइट? सो क्या हो रहा होता है कि वो जो गिल्ट आता है हमारे ऊपर, बट यू नीड टू आस्क नाउ, यू नो, यू शुड, आई नो आप सबके मन में ना ये क्वेश्चन अब आएगा कि हम तो खुद से पूछते हैं ये क्वेश्चन. अब अगली बार भी ना कभी अपने आप को पूछना, आई एम टायर्ड और आई एम जस्ट बीइंग लेजी, यू विल नो. ठीक है? और इस गिल्ट साइकिल को कम ही ऐसे करना है. तो अभी हमें पहले इस गिल्ट साइकिल को कैसे समझना है कि हमें गिल्ट होता है कि हम नहीं पढ़ रहे, उससे एंजाइटी होती है. वो एंजाइटी को कम करने के लिए हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं, और वो अवॉइड करने के लिए लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? सो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए हमें टाइम ऑफ मिल जाता है उस चीज में. उससे गिल्ट और ज्यादा बढ़ता ही है. सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग. नाउ, एज आई टोल्ड यू that we'll be working on these things also, that अगर हम एक challenge बता रहे हैं तो साथ ही में I'll tell you how to work on that, right? So in this one we need to focus more on that. We need to ask ourselves question that are we really exhausted or we are being lazy? Are we okay about it? Now, that's the thing. Like some Sachin has said that he is watching some web series with guilt. Why? Because now what is happening? There is a guilt that you are not studying. So that is creating anxiety. So what you are देखने लग गए हैं, उसका भी गिल्ट साथ में जुड़ रहा है. So we need to work on this thing. True. Okay. So the next one is weekend pressure. Now, what happens throughout the week? We keep on saying that, you know, weekend pe dekhenge, we'll do this thing on weekend. So that is also a part of procrastinating things. ठीक है? So what happens on the weekends? It's not only that you are not going to the job. That doesn't mean that you are taking time off from the other responsibilities you are having. At that time you have other family chores, family friends are coming, other things you have to, even if you're working, you're studying, so many commitments are there that you have to go to the bazaar, you have to buy something, so many things are going on. Like a Sunday fully booked with responsibilities is there. It's just work is not there, but at the same point what we are doing the whole Sunday, we are stressed. Why? Because the next day is Monday. So at that time also we are not, the weekend is not weekending, right? It is not, because we keep on thinking about Monday कि अच्छा अब कल से ये करना है, and Sunday को, you know, हम बैठे होते हैं and we are thinking we have wasted a whole Sunday. Now a whole week will be there, after that we'll be getting one more Sunday. So these things are there. What we have to do for this: break studies into slots. माइक्रो स्टडी मेथड बोलते हैं इसको. वो कैसे करना है हम लोगों को? दैट if you feel that you need to work study for 3 hours, it is not possible for you to sit for 3 hours because other things are also there. You can break the slots. For example, in the morning you say that after having my breakfast I'll study for 1 hour, maybe after my lunch
or in the evening time I'll study for 1 hour, and at night I'll study for 1 hour, right? Because other things are also there. We are here to tell you about creating balance, not only how you have to study, because we understand other things are also there. You have to be there for other things also. There are other roles also in your life. So what we have to do for this weekend pressure, we have to study in the slots. Yeah, even on the festival times it happens. Now distraction overload at home, right? Like हमने वो myth में हमने we have gone through that myth that distraction is there. We are waiting for the perfect time, that at what time the perfect time will be there. So the very first thing distraction is coming from phone and social media. Now can you tell me what is your screen time? Can you write down in the chat box that what is your screen time? 2 hours, 3 hours, 12 hours, 9 hours, 16 hours, laptop whole day. Okay, okay. Now see, okay, now that's the thing that if you'll ask everybody, the average is more than 6 hours, right? If I'll say that in today's world, the internet ka zamana hai, it is very important to be active on social media and phone. So 3 to 4 hours of social media and phone is okay, but अगर इससे ज़्यादा है तो we need to work on that. Why? Because it is creating a lot of distraction, not only पढ़ाई में, other in the other things also it is creating um, a lot of things also. Now what happens that the household noises is there, social media is there, phone is there. The sub important thing, what is that? If I'm studying or doing something, I'll be like, oh, I've got a notification, I'll open my phone, and after that reel, एक reel से 10 reel, 10 reel से 20 reels, and we lose track of time that what actually we were doing, right? So distraction is there. It is creating difficulty for us to create that study zone we are aiming for, right? Now the scrolling thing is going on. For this, what we have to do, the solution for this is being mindful. I'm not saying that keep your phone aside. I am not saying, I'm not pushing you to put your phone on DND, or even if put your phone on off your इंटरनेट, बिकॉज अगर हम वो चीज करेंगे तो वन थिंग विल कम, फोमो, ओह मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा या कर रही, अरे मेरी उस फ्रेंड ने मुझे मैसेज तो नहीं किया. नो डाउट आप फोन साइड पर रख दोगे, बट दीज थॉट्स विल कीप ऑन पॉपिंग. So the thing is that you need to be mindful while scrolling, very important. So there is a study called, that even if you are using your phone, for example, it's 49 right now. So I'll say, okay, मैंने अपना phone लिया है till 55, 3:55, I'll use my phone. You just need to be mindful about the time you are using the phone, right? So what will happen that even if when I'll be using my mobile phone, I'll be always be mindful. Oh, now it's 50. I have 5 minutes left. Right? That mindless scrolling should be subtracted there. You should be aware. The only solution for this distraction is being mindful. If we'll say switch off the phone, now there are some people who will be like, oh, exams are coming, I'll delete and uninstall my Instagram. I have a friend, so every time we used to have a exam, she used to uninstall her Instagram, and I used to ask her, okay, then what do you do? To see, she was like, now I use YouTube Shorts. So the thing is that the FOMO is going to be there. So we should not create more problems for us, right? We just need to be mindful that whatever we are doing. Okay. So the next challenge is inconsistent routine. See,
We need to focus, like we said, that if you are not able to maintain that consistency of studying every day, है ना, जैसे कि सब लोग होते हैं वो एक दिन का टारगेट बनाते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट एवरीडे रूटीन और टारगेट्स, we should make a weekly target, right? Because there are some days you are high on energy, some days energy is very low, right? So what you need to do, you just need to give yourself that window that it's okay, even if you feel that there are some days you have very low energy, you just need to give yourself a break, right? So the next one is obviously managing the multiple roles. This is also a very emerging problem we see, that you are employees by day, student by night. There are household responsibilities also, and there are parents, right, who are learners. It is very difficult for them also. Now, what we have to do, the very first one is the first thing, employees by days and student by night. In this, we have talked about in the myth also that the mental fatigue, the transition needs time, right? Because in the morning you are having all different set of responsibilities, and at night you have different set of responsibilities, right? Because when you are student, you are your teacher, you are your principal, you are your tutor, okay, सब कुछ हम ही होते हैं, तो वो ट्रांजिशन के लिए भी टाइम चाहिए, right? So in this also mental fatigue, we have to take care of that mental fatigue, that what we are doing. Other household responsibilities, do it, as we have talked in the challenges part, that we have to work also on that everything is important, you need to study in the slots. If you feel that after coming back, like I have read one of the comments that somebody said that for married people it is very difficult to study, to have that time. So what we have to do, what do we say कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है बैठ के, that perfectionist thing is there. So what we can do, we just need to be little flexible in that. Okay, 20 minutes पढ़ा, half an hour पढ़ा, after that we'll try. Our brain is very active according to that, because हम लोगों को एक वो मिथ है कि हमें इकट्ठे से बैठना है, 2 घंटे पढ़ेंगे तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे. जो हमारा ब्रेन है दैट कैन एडजस्ट ब्यूटिफुली, हमें जस्ट उसको मोल्ड करना है, सो वी कैन स्टडी इन द स्लॉट्स, राइट? एंड पेरेंट्स एज लर्नर्स, बहुत होता है कि जब हम पढ़ने भी बैठते हैं, कुछ होता है तो दैट गिल्ट इज देयर, दैट यू नो वी शुड हैव devoted more time to our children's, or to our parents, we have to give time to them. So the thing is that uh, even if give them time in that mental fatigue, जब हम उसको दूर कर रहे हैं, तो start giving time to people around you, right? उसकी वजह से क्या होगा, हम मैनेज कर पाएंगे अपने जो मल्टीपल रोल्स हैं हमारे. Okay. Now, the next thing is that there are some emotional and mental challenges we do feel, right? The very first one is emotional challenge, studying alone. वही क्या होता है कि there are no classmates to share your progress, है ना? और self motivation becomes really really harder without the external push. At the same point, जब हम अपने आप को compare करते हैं दूसरे लोगों से, तो कहीं ना कहीं वो emotionally हम पे बहुत impact करता है. अभी हम लोग को कई बार लगता है कि जो कंपैरिजन है दैट इज अ नेगेटिव थिंग, बट इट इज नॉट, बिकॉज द कंपैरिजन थिंग्स रियली पुशेस अस हार्ड टू डू बेटर. ठीक है, तो जब हमें लगता है कि देर इज नो वन अराउंड, क्योंकि स्कूल में भी जैसे क्या होता था, जब हमारे एग्जाम्स होते थे कि आप आराम से पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, बट सडनली योर फ्रेंड कम्स एंड से तूने वो वाला टॉपिक पढ़ा, एंड यू लाइक ओह मुझे तो सब भूल गया, सो यू जस्ट रश टू दैट टॉपिक. अरे यार इसने वो कर लिया, और उसने भी कहा था कि दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, सो वी कीप ऑन रशिंग, एंड हम पूरी जान लगा देते हैं उस चीज को पढ़ने के लिए. कहीं ना कहीं हमें उस चीज की हैबिट होती है, because from first class to till your graduation, post graduation, whatever last degree you have done in college or university, we keep on comparing ourselves with that degree to this degree, है ना? वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं हमारी वो सेम रहती हैं. तो कहीं ना कहीं जब हमें लगता है कि देर इज नो वन अराउंड, you also know that everybody is different, सबके
मार्क्स डिफरेंट आएंगे, बट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ we are studying alone, our comparison should be with us. How comparison? That okay, last time when I was having these exams, how well I was studying, right? Or agar if I was studying in the last week, how well I am studying this week. So this comparison should be there, right? And self motivation, I know that it is very important and difficult also to have that self motivation. So what do we do? There are people around you, you can tell them that how you are studying. For example, uh, I'm also pursuing my PhD and I'm working also. So what do I do? I need an external push. So if I'm doing something extra, for example, today I'm doing this webinar, I'm taking my sessions, I'll go home, I'll study. The next morning, you know what I'll do? I'll tell to my parents, my friends that, yesterday I worked so much. I've done this, I've done this, I've done this. So what will I get? I'll get the appreciation. It's very important for us to get the external feedback. The external push is very important, right? So we need to focus on that. Now, the next one, time feels short, stress feels long. Now, like we have talked about mental load of juggling multiple roles, employee, child, family. At the same point, you're a learner also. So the constant rushing over things that ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है, वो करना है, it creates a lot of stress and you feel that you are stuck. पूरे दिन का भी सोच लिया, उसके बाद at night also you feel really stuck. And there is very common line which we all hear that दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है. So that problems also come. So decision fatigues from making too many daily choices, overthinking about not doing enough. So this is also there. So जब हमें टाइम कम लगता है और स्ट्रेस ज्यादा लगने लग जाता है बिकॉज वी आर रशिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर. सो अगेन आई एम सेइंग दैट वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग वीकली गोल्स, राइट? इसके लिए भी आप वीकली गोल्स बनाओ. इवन इफ यू आर एबल टू गिव आर एवरी डे, दैट्स गुड. बट द मेन थिंग इज दैट व्हेन यू आर सेइंग कि मैं अभी देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि मैंने कितना अचीव करा है, उसको वीकली की जगह, उसको सॉरी डेली की जगह उसको वीकली में देखना शुरू करो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट पुश. फॉर एग्जाम्पल, मंडे को आपने टाइम दिया, ट्यूसडे को नहीं दे पाए, वेंसडे को नहीं दे पाए. Wednesday ko you will not feel bad because Thursday, Friday, Saturday, and Sunday you have 4 more days to cope up what you think you have not achieved in the other 2 days. Right? If I'll say that Monday ko I'll study for 2 hours, and if I'm not able to study for 2 hours, Tuesday ko bhi I'll keep on thinking that Monday ko main nahi padhi. Wednesday ko bhi I'll keep on thinking that yaar main Monday ko अच्छे से नहीं पढ़ी. So half of the time na those thoughts are going to overpower me. So it is very important for us to make weekly targets. The next one, the very big thing, very long messages. I'll read that in the end, right? Okay. So the next thing we'll be talking about is cognitive load, right? Um, and how we can learn with having that cognitive load. So what happens? This is the summary of all the problems we are having, all the myths, all the managing multiple roles at the same point, all the emotional challenges. Cognitive load is there. The adult brain handles multiple responsibilities. So when there is so much present there, it is very important and very difficult for us to memorize thing. मेंटल क्लटर जो है वो बहुत स्लो डाउन करता है हमारी चीजें सोचने के लिए. अभी अगर इफ आई गिव यू एग्जांपल दैट इफ आई नीड टू climb a mountain, मुझे कहीं पे जाना है, I have to walk, it is going to take 1 hour, a normal walk. But if you will say that ma'am you have to take 5 kg on yourself in a bag, so क्या मैं तब भी 1 hour में उसको वहां पे जा पाऊंगी? और for example 10 kilograms of weight is there on me, so do you think that I'll be able to climb that mountain in 1 hour, or I'll be little bit slow down?
What do you think? Slow down, right? So yeah, little bit slow down, right? So little bit slow down will be there. So same as with the cognitive load. When you'll keep on loading things, when you'll keep on loading that failure thing that मैं कल भी नहीं पढ़ी, मैं आज भी नहीं पढ़ा, मैं ऐसे नहीं कर पाया, वैसे नहीं कर पाया, काम पे भी ये हो रहा है. When you will put a load on yourself, mental clutter is going to slow down your processing speed. ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे माउंटेन पे नहीं पहुंचूंगी, मैं पहुंचूंगी, but it will take a lot of energy, maybe days to go there, right? So what happens when too many things are going on, our brain just shuts off. So जब वो shut off होता है, वो blank हो जाता है, तब even if you study for 1 hour 2 hour, we are not able to memorize anything, right? So now ये तो हो गया मेमोरी लोड है, कॉग्निटिव लोड है. अब इसको डील कैसे करना है? यूज द माइक्रो लर्निंग, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट? अभी उसमें क्या है, वी हैव टू स्टडी बिटवीन 15 to 20 मिनट्स का जो चंक है, जो हमने कहा था कि हमें पढ़ना है, ठीक है? Then the next thing is do a brain dump. It is very important. What happens that when there is cognitive load, so many things are going on, write it on a paper. Take a pencil, take a paper, and write it down. Don't do it on the mobile phone, because if you will do it in the mobile phone, there is a notification, then again you are into that mindless scrolling. So, what you have to do, take a paper and a pen, write down that what are the tasks you have to do, dump it all there. And at that time, you will say, oh, there are only 5 things I need to do. बट जब वो 5 चीजें दिमाग में होती हैं तो वो बहुत क्लटर हमें बना देती हैं. तो हमें क्या करना है? हैव टू राइट इट डाउन. आफ्टर राइटिंग इट डाउन, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 5 थिंग्स यू नीड टू डू. एट द सेम पॉइंट प्रायोरिटी वाइज उस चीज को लिखोगे, दैट व्हाट इज द प्रायोरिटी आई नीड टू डू. So that is going to help you out in giving how much importance you have to give at the that time. Then one focus at a time. द थिंग वी हैव सेड दैट हमें वो प्रायोरिटी पे करना है. जब हम वो प्रायोरिटी पे करेंगे तो ऑब्वियसली हम उस चीज पे फोकस करेंगे, बिकॉज when we'll do that one thing, then only we can step to the another one, right? And the next one is use spaced repetition. Review small portions daily instead of cramming. So अगर आप लोगों ने देखा हो कि आजकल हम क्या कर सकते हैं, दैट वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन जो भी हमने पढ़ा है. इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, जस्ट ओपन अप यूट्यूब चैनल, जहाँ पे वो चीज उसके रिगार्डिंग भी कुछ है, तो आप उस चीज को पढ़िए वहां पे. आप उसको क्रैम मत करिए. स्मॉल पोर्शंस एवरी डे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, I was on a leave some days back and this webinar was scheduled. So what I used to do, I was not preparing for this PPT, but mentally I was preparing myself again and again. मैं कहीं ना कहीं जब जा रही थी, वॉक के लिए जा रही थी, कहीं घूमने जा रही थी, तो मैं रास्ते में जो मेरे पास टाइम था, तो आई वॉज जस्ट ओपनिंग सर्टन पेजेस कि अच्छा ये चीज पढ़ सकते हैं, अच्छा ये चीज कर सकते हैं. सो वो क्या हुआ कि जिस दिन मैं ये प्रिपेयर करने के लिए बैठी, तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू मेक अप माई माइंड कि मुझे वो क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कि हाँ बस यहाँ से लिया वहां से लिया. So I knew what I have to do. So these are some tips which we need to work on for the cognitive load. Now, the digital distraction is there, as you know, we have seen that बहुत लोगों का screen time was more than 5 or 6 hours. So we have to see that जो हमारे phone alerts हैं, social media, emails हैं, ये हमें हमारी अटेंशन को बहुत डाइवर्ट करते हैं. नाउ ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करते हैं? नोटिफिकेशन ओवरलोड, दैट पिंगिंग ऑफ मैसेजेस अगेन एंड अगेन, एंड हमें हमेशा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है. वही फोमो जो है, हमें आता है कि आई डोंट नो व्हाट आई मस्ट बी मिसिंग, एंड दैट चेकिंग वंस बिकम्स 20 मिनट्स, राइट? वो जो छोटी सी ब्रेक है, वो एक बहुत लॉन्ग जो है इंटरप्शन में चली जाती है. उसके बाद जो हमारा डीप फोकस बनता है, उससे हम बिल्कुल अलग चले जाते हैं. बिकॉज व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल, आई एम स्टडिंग, मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी का, एंड सडनली मुझे एक बॉलीवुड की न्यूज आती है कि ओके, इसकी मैरिज है, वो अब नहीं हो रही है. तो व्हाट आई डू, सडनली वो इतना जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ डेप्थ में, मेरा जो अटेंशन है वो शिफ्ट होता है बिल्कुल ऑपोजिट चीज के ऊपर.
ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा डीप फोकस है उसको कम कर देता है, बिकॉज वो एक डोपामिन हिट मिलता है हमें उन चीजों से। तो क्योंकि पढ़ाई हमें यूजुअली बोरिंग लगती है, तो हमें एकदम वो डोपामिन हिट मिलता है, हम उसमें चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज के ऊपर भी काम करना है। नाउ कैसे टिप्स हैं, जैसे कि कईयों ने बोला था कि वो नोटिफिकेशन ही ऑफ कर देते हैं, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। टर्न ऑफ द नॉन एसेंशियल वन, लाइक अगर आपका व्हाट्सएप है आप उसको रखिए, ठीक है। और अगर आपको कई बार, जैसे आई हैव अ फ्रेंड, वेन एवर यू यूज टू स्टडी शी यूज टू कीप ऑन मैसेजिंग मी। अगर मैं इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखती थी तो वो मुझे इंस्टाग्राम की रील व्हाट्सएप पे भेज देती थी, तो मुझे पता होता था कि शी इज गोइंग टू बी देयर। तो मैं व्हाट्सएप पे उसी को म्यूट कर देती थी कुछ देर के लिए, ठीक है। देन यू कैन यूज डू नॉट डिस्टर्ब ऑन द और फोकस मोड ऑन योर डिवाइसेस। एट द सेम पॉइंट एक टाइम रखिए, माइंडफुल रहिए कि आपको किस टाइम पे जाके चेक इन करना है अपनी चीजों के ऊपर। उसके बाद देर आर सो मेनी ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स एंड एप्स, यू कैन फाइंड इट ऑन प्ले स्टोर एंड iOS, कि जहाँ पे देर इज ऐप इन विच when you put a lock on Instagram, so what happens, वहां पे एक टाइम आ जाता है, 15 seconds का वॉच वहां पे आता है। एट दैट 15 seconds यू हैव टू सी कि मुझे यूज करना है कि नहीं करना। तो उस चीज के चक्कर में व्हाट हैपेंस समटाइम्स, देयर आर सम पीपल दे बी लाइक ओह इट्स ओके, रहने देते हैं, they just off it, right? So you can also take help of those apps when you are studying. Next, now how can we use the technology smarter? You can record your notes, revisit your lectures anytime for better understanding. एक फ्लैश कार्ड ऐप आती है जिसके ऊपर यू कैन रिकॉल, क्विक रिकॉल वट एवर यू हैव स्टडिंग। उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक्स हैं, यू कैन सेल्फ असेस योर सेल्फ। Then Pomodoro timers are there. In the next part, I'll be telling you about this Pomodoro in the time management techniques. Then the note taking apps that you can organize everything, whatever you need to study. Okay. Now, the next thing we need to work on. Are we clear till now? Are we clear till now? Crystal clear. Okay. Okay, so the next thing we need to talk about is burnout. Can anybody tell me that what is being burnout means? क्या मतलब है burnout होने का? जब आप mentally burnout होते हो तो उसका क्या मतलब होता है? कब होते हैं हम out of control? Okay, anger. Okay, no worries. So we'll be talking about what is burnout. Okay. सो देर आर 3 types ऑफ बर्नआउट्स, उसके साइंस होते हैं। बर्नआउट का मतलब होता है जब हमने बहुत ज्यादा चीजें कर ली होती है, फॉर एग्जाम्पल जॉब पे भी बहुत काम कर लिया, घर आके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर ली, तो बर्नआउट का मतलब होता है जब हम कहते हैं ना हिंदी में थक जाते, थकावट हो जाती है बहुत ज्यादा, कि हर एक चीज बर्नआउट हो जाती है हमारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक जीबी का डाटा मिलता है अपने फोन में, जब हम उसको पूरा यूज कर लेते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाता है, वो बर्न आउट हो जाता है। तो हमारी भी एक पूरे दिन की एनर्जी होती है जो वो पूरी खत्म हो जाती है। तो अभी आप लोगों को समझाती हूँ, यू नीड टू सी दैट व्हेन आर यू बर्न आउट, देयर आर सिम्टम्स, साइंस व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन। द वेरी फर्स्ट वन इज इमोशनल साइंस। जब आपको बहुत ज्यादा इरिटेबल, एंशियस, होपलेस फील होता है, लॉस ऑफ मोटिवेशन है टू वर्क स्टडी, फीलिंग ओवरवेल्म बाय स्मॉल टास्क। यू आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि व्हेन यू आर वेरी मच बर्न आउट, यू आर वेरी मच टायर्ड, अगर कोई ऐसे भी बोल देता है कि डोर क्यों नहीं क्लोज करा, तो आपका एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है कि फिर क्या हो गया अगर मैंने नहीं करा। तो दैट इज अ इमोशनल साइन। जब आपको छोटी सी चीज भी इतनी ज्यादा ऑफेंड कर देती है, और आफ्टर समटाइम्स यू फील रियली गिल्टी कि यार मैंने ऐसे क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो दैट इज अ साइन ऑफ बर्न आउट, दैट यू हैव एक्सीड सर्टन लिमिट्स, that you are tired, you need some rest. The physical signs, the constant fatigue, low in energy. There are some times that
इतनी सारी चीजें हम उसमें हम जगल कर रहे होते हैं, तो हमें हमेशा थका थका लगता है, बहुत लो एनर्जी लगती है, हमें नींद नहीं आती है रात को, हेडेक्स हैं, स्टमक इश्यूज हैं, टेंशन होता है. There is a headache called as tension type headache which happens here, right? So usually वो एक बहुत मतलब burnout का sign होता है कि we need to slow down, we need to take. Now why we are talking about these signs? Because जब हमें ये सब signs दिखते हैं तो हमें slow down करना है, कहीं ना कहीं अपने आप को वो mental fatigue से हटाना है. Cognitive signs क्या होते हैं? कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, ब्रेन फॉग होता है, स्लोअर थिंकिंग हो जाती है. कई बार जब आपको लगता है कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, डिसीजन नहीं अच्छे से हो रहा, ब्रेन फॉग हो रहा है, याद क्यों नहीं हो रही चीजें, वी कीप ऑन क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स लाइक दिस. सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इट्स नॉट अबाउट द कंसंट्रेशन, इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारी जो मेमोरी पावर कम हो गई है, इट्स दैट बर्नआउट इज देयर. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट बर्नआउट. नाउ व्हाट विल डू, फर्स्ट विल सी कितना बर्नआउट है. दिस इज अ टेस्ट, राइट? इसमें 10 आइटम्स हैं, आपने इसको पढ़ना है, मैं भी पढ़ूंगी. अगर आपको लगता है कि इट्स यस, तो यू नीड टू काउंट डाउन 1 2, प्लस करते रहना अगर आपको लगता है यस और नो में. द वेरी फर्स्ट वन इज, आई ऑफन फील एग्जॉस्टेड और ड्रेन्ड. इफ yes, then count as 1. I have difficulty focusing on work or study. The next one, I feel irritable or impatient frequently. The next one, I struggle to motivate myself to start the tasks. I feel overwhelmed by responsibilities. I have trouble sleeping or feel unrested. I procrastinate or avoid tasks. I feel disconnected from my work or studies. I have experienced frequent stress related symptoms, headaches or tension. I feel lack of accomplishment or doubt my abilities. So, क्या स्कोर आया आप लोगों का? Do tell. Okay. Okay. So this was the assessment. अगर किसी का रहता है तो वो कर सकता है. Now I'll be showing you the scoring. जो भी आपका स्कोर आया है वो आप देखिएगा. अगर वो 0 से 2 के बीच में है तो there is a low risk. You are keeping good care of yourself. अगर वो 3 और 5 के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क है बर्नआउट का. कोपिंग स्ट्रैटेजीज, हमें ब्रेक्स लेनी है, माइक्रो स्टडिंग करनी है, माइंडफुल होना है. अगर आपका स्कोर 6 से लेके 10 के बीच में है तो हाई रिस्क ऑफ बर्नआउट है. उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी सेल्फ केयर के ऊपर प्रायोरिटाइज करना है, रिड्यूस करना है थोड़ा सा वर्कलोड. डजेंट मीन एवरी डे, एक दिन के लिए. वही चीजें जो हम पहले बात कर रहे थे, लेजीनेस और एग्जॉशन के बीच में हमें समझना पड़ेगा दैट एट व्हाट टाइम वी आर मेकिंग एक्सक्यूज एंड व्हाट टाइम आवर बॉडी नीड्स सम रेस्ट. Okay, so is this scoring clear? You got to know where do you fall, low, moderate or high? Okay, somebody said that they want to see this slide. Okay, so even if अगर आपका हाई रिस्क आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का बर्नआउट है. दैट मीन्स कि बर्नआउट हो सकता है. सो ये सब चीजें हम सब फील करते हैं. देर आर सम डेज आई ऑल्सो फील दिस, बट एट द सेम पॉइंट ये चीज प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए. हमें इसके बीच में थोड़ा सा अपने आप को माइंडफुल करना है, हमें अच्छे से रहना है. ओके, नाउ अफेक्टिव कोपिंग टूल्स क्या है? प्रायोरिटाइज करना है, अच्छे से प्लान करनी है चीजें, मेंटल ब्रेक्स लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडफुलनेस हमें करनी है, रिलैक्सेशन करनी है, लोगों के साथ कनेक्ट करो, शेयर करो, एक्सरसाइज के लिए जाओ. गिव योर सेल्फ हाफ एन आवर एवरी सिंगल. डिटॉक्स है, मैनेज योर नोटिफिकेशंस, जो भी हमने पीछे बात करी है वो सब हमें करना है. न्यूट्रिशन एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अच्छे से खाना खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
आप वो जरूर सोइए। किसी को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है तो वो जरूर करिए, डोंट मिस आउट ऑन दैट, स्पेंड टाइम विद देम। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी नाउ वील टॉक अबाउट इज प्रोडक्टिविटी मिथ्स। नाउ एक ये भी मिथ है बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी का, दैट आई शुड बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम। किस किस को लगता है ऐसा कि हमेशा प्रोडक्टिव होना चाहिए? मी? नो? ओके, ओके। सो दिस इज द थिंग दैट अभी हम कुछ मिथ्स हैं, हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज यू नो एज अ साइकोलॉजिस्ट देर आर सर्टन टॉपिक्स जिसके बारे में हमारे पास कांस्टेंट क्वेश्चन आता है, कंसंट्रेशन के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन, प्रोडक्टिविटी, परफेक्शनिज्म, procrastination, concentration. These things are very important. So we'll be talking about these myths also. Like you need to सी कि जो हमारा ब्रेन है वो कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि उसको हर एक चीज चाहिए। इट नीड वर्कलोड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्लीप है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें उसके ऊपर भी बहुत काम करना है। वी शुड नॉट ओनली फोकस कि हम लोगों को बस ऑल द टाइम प्रोडक्टिव रहना है। जब हम अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो व्हेन वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट वी फील गिल्टी। The next one, others manage fine, I am failing. हमें लगता है जैसे there are some people, I remember that there was one client of mine, uh, उसने बोला कि मेरे से ये चीज नहीं हो रही, तो मैंने बोला इट्स ओके, दूसरे पर्सन से अपने को क्यों कंपेयर करना? तो दैट पर्सन सेड मी वन थिंग, मैम, दैट पर्सन इज आल्सो हैविंग 24 आवर्स, आई एम आल्सो हैविंग 24 आवर्स, हाउ अदर पीपल आर मैनेजिंग इट एंड हाउ आई एम नॉट एबल टू डू इट, राइट? सो समटाइम्स व्हाट डू वी सी, हमें दूसरों का कॉन्फिडेंस दिखता है, हमें उनके ब्रेकडाउन्स नहीं दिखते हैं। लाइक अगर मेरा कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो शायद वो दूसरों को नहीं पता, बिकॉज ब्रेकडाउन्स आई am I audible? Okay. Just wait. I think there is. Okay. So the next one we need to talk about is that if it's not perfect, it's not worth doing. Same as we have talked about that जो लोग बोलते हैं perfect time के लिए वेट करते हैं या किसी भी चीज के लिए वेट करते हैं, उसके लिए कि हम परफेक्ट टाइम, जब एक परफेक्शनिज्म वाली चीज आ जाती है देन प्रोडक्टिविटी इज नॉट एबल टू बी देयर, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? Okay, the next one is if I skip a day everything is ruined, as we have said कि अगर हमें लगता है कि अगर हमारी वो कंसिस्टेंसी है, अगर वो ब्रेक होती है तो हमने अपना वो जो एक रूल है उसको ब्रेक कर दिया है, ऐसा नहीं है। Then I need long hours to be productive. Uh, is the PPT visible? Okay. Okay. Now I need motivation to start studying. So एक ये चीज भी है, वही कि हमें एक मोटिवेशन चाहिए, हम तभी पढ़ पाएंगे
हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर वो मोटिवेशन नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे. आई मस्ट फील एनर्जेटिक टू स्टडी. सो व्हाट डू वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट परफेक्ट टाइम वी कैन हैव to feel energetic. Okay, the next one is I should finish task in one setting. Right now, why we are talking about these myths? Now you can think that there is some kind of repetition, right? It is only आप लोग पीछे मुड़ के देख सको कि अभी तक हमने क्या करा है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होती है. वी नीड टू वर्क ऑन दैट. नाउ द थिंग इज दैट द प्रोडक्टिविटी का मतलब हमें ये लगता है कि हमें एक ही सिटिंग में बैठ के वी हैव टू डू एवरीथिंग. इट इज नॉट. हम स्मॉल चंक्स में बैठ के भी उन चीजों को कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट मल्टीटास्किंग मेक्स मी मोर प्रोडक्टिव. है ना, अगर मैंने ये भी कर दिया वो भी कर दिया. नाउ यू मस्ट सी दैट देर आर सम डेज वी फील दैट बहुत सारा काम कर लेते हैं हम लोग एंड हमें रात को लगता है यार आज का दिन बड़ा प्रोडक्टिव था. राइट, that time we only feel जब हमारी एनर्जी बहुत अच्छी होती है उस दिन. like we have talked about that there are some days when energy is very much and there are some days when energy is very low. So it's not about your productivity, it's about your energy. ठीक है, तो जिस दिन आपको लगता है कि your energy is really good, you can multitask. And in some days when you feel that it is not, then you just need to relax a little bit and do your things in small chunks. Then I need silence and perfect environment study. as we have seen कि नहीं, हमारा जो ब्रेन है वो अडेप्ट करता है चीजों को लेके और हमें उसको अडेप्ट करना है अपने ब्रेन को, ना कि हमें वो परफेक्ट टाइम परफेक्ट स्लॉट नहीं देखना है. Now we'll go to the next thing. Now we'll uh, now we'll talk about time management कैसे करेंगे. Now we have little less time, so we'll हम जल्दी जल्दी से करेंगे. For time management, what we need to work on one thing, that is know your peak hours. Now there are some people who are the morning persons and some people who are at the night they study. So you need to see that at what time you are very much uh, active. Like I cannot study in the morning. Usually I keep on saying that I can wake up till I can wake up till 3 to 5. Okay, the classes were till 5. Right, so like I can say कि मैं 5 बजे तक जाके पढ़ सकती हूँ, but I cannot wake up at 5 a.m. to study. So there are some people who will be like रात को they can't study. So you need to know your peak hours, that at what time your energy is at peak. Right, the next thing, yeah, the thing which we were talking about is that is the Pomodoro technique, right? So we need to work on the Pomodoro. So what happens? Like we have seen that the concentration is only for 20 minutes or 30 minutes. So in Pomodoro technique, what do? We study for 25 minutes and we take break for 5 minutes. ठीक है, or you can study for 50 minutes and you can take a break for 10 minutes. What happens? वो जो मेंटल फटीग आता है बीच में हमारा पढ़ने के लिए, दिस थिंग्स हेल्प अस. फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है एक बार में बैठ के एक सिटिंग में, तो व्हाट हैपेंस, not 4 hours, even 2 hours also you study from 3 to 5. After that you feel so tired that you take a break for the whole day. यार बहुत पढ़ लिया, दिमाग थक गया. So what we have to do, you can use Pomodoro technique. You can note it down somewhere. You can also study it thoroughly on Google पे भी आपको मिलेगा कि आपको कैसे सेट्स में इसको फॉलो करना है. आप इसको 25 मिनट से शुरू करो, 25 मिनट से लेके 50 मिनट्स तक जा सकते हो कि 30 मिनट्स पढ़ा, आपने 5 मिनट्स के लिए ब्रेक लिया. इसमें भी बहुत माइंडफुल होना है. 20 मिनट्स के लिए पढ़ना है, राइट. एट द सेम पॉइंट 5 मिनट के लिए हमें ब्रेक लेना है. अब उस ब्रेक में डोंट यूज योर मोबाइल फोन. अपना मोबाइल फोन मत देखना, बिकॉज फिर से वही डोपामिन हिट मिलेगा, वो माइंडलेस स्क्रोलिंग. बट यस, अगर आप वो माइंडफुल हो सकते हो कि मुझे 350 से लेके 55 तक इंस्टाग्राम चलाना है, तो आप चला सकते हो. राइट, या क्लासेस कैन बी.
क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। एट द सेम पॉइंट, जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपने 25 मिनट के लिए पढ़ा है, 30 मिनट्स के लिए पढ़ा है, यू कैन गो फॉर अ क्विक ब्रेक. You can go to the washroom, you can go to the kitchen, you can talk to someone. आप एक बार बाहर चले गए, थोड़ा सा वॉक कर लिया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ दैट थिंग, ताकि आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो. स्टार्ट इट विथ 25 मिनट्स, धीरे धीरे आप इसको 50 मिनट्स तक लेके जा सकते हो. इवन Sachin, what question did you ask? We'll take the questions in the end about this link. No, the link attendance sheet sir has sent. Amit sir. Yes, yes. So taking long breath, drinking water, washing, yes, this can help, right? So the next tip is micro studying sessions, like we said, that बीच बीच में अगर आप टाइम लेते हो तो यू कैन रिवाइज इट डाउन. अगर आपने कुछ रिकॉर्ड करा है, अगर आपने ट्रैवल करना है कहीं पे, तो यू कैन स्टडी. माइक्रो स्टडी सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये माइक्रो स्टडी सेशंस के बीच में यू डोंट नीड टू मच कंसंट्रेशन. इट्स जस्ट यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेयर. लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल कि इस वेबिनार के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द होल वीक बाय हैविंग माइक्रो स्टडी सेशंस. मैं धीरे धीरे बीच बीच में पढ़ रही थी इन चीजों के बारे में. आई वाज टेकिंग सम नोट्स. ऑब्वियसली कुछ चीज मुझे रेलिवेंट लग रही थी, तो आई वाज सेंडिंग इट टू माय ओन सेल्फ ऑन व्हाट्सएप की आई विल बी फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, राइट. नेक्स्ट थिंग इज प्रायोरिटाइज योर टास्क. लाइक वी हैव सेड, मेंटल क्लटर हो रहा है तो उसको राइट इट डाउन. आप सबसे ज्यादा लिखो कि मस्ट डू टॉपिक्स कौन से हैं, आपको वो कौन से करने हैं, ठीक है. इस वीक के लिए आपको क्या करना है और लेटर क्या करना है. दिस इज कॉल्ड एज 3 बॉक्स सिस्टम. ठीक है, हमें प्रायोरिटाइज करना है. जैसे कि आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो थोड़ा सा. आपने 5 चीजें लिख ली कि आपको कौन सी 5 चीजें करनी है, 1 2 3 4 5. आफ्टर दैट प्रायोरिटाइज दैट थिंग कि दिस इज important, this can wait, or maybe this thing I can do it for the later time. So it is very important for us. For example लेते हैं कि अगर आपका मैथ्स का पेपर है ना, that today we have to revise the formulas. This week मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और लेटर जब मैं ये सब चीजें कर लूंगा या कर लूंगी, आई हैव टू रिवाइज द प्रीवियस ईयर पेपर. नाउ इफ यू से कि नहीं, आज ही मैंने फॉर्मूला करने हैं, आज ही मैंने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और आज ही मैंने पेपर्स भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करने हैं, तो आप मेंटली वैसे ही फटीग हो जाते हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 things you have to write it down today, this week and later. ठीक है. तो टुडे में आपका आज का टास्क बन गया. दिस वीक में आपका जो वीकली हम लोग करते हैं वो बनता है. और लेटर भी है. वो लेटर का मतलब ये नहीं है कि कभी होगा ही नहीं. जब आप अपने ये अपना टास्क कंप्लीट करोगे, तो नेक्स्ट जो आपका वीक आएगा, यू कैन स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स जो ऑप्शनल हैं, जो वेट कर सकती हैं, राइट. जैसे अगर आपका सिलेबस ही पूरा नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ के क्या करोगे जब आपको क्लियर ही नहीं है. क्योंकि अगर आप बिना पढ़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने लग जाओगे, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप खुद ही डर जाओगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, राइट. सो दीज थिंग्स आर ऑप्शनल. पहले हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें वो करनी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. द नेक्स्ट थिंग इज 2 minute रूल, राइट. जो हमारा ब्रेन है, आपने कभी देखा होगा दैट समटाइम्स वी सिट एंड वी थिंक आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट. बट देयर इज अ 2 minute रूल, दैट जो ब्रेन है ना, इट कैन ओनली कंट्रोल यू बियॉन्ड 2 minutes. ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, इसका पढ़ाई से थोड़ा हटके एग्जाम्पल देती हूँ. वन ऑफ माई students, I've told her that she was like कि I keep on procrastinating. I have to redo my all the clothes and all of these things. मुझे अपना wardrobe set करना है, right. So she was like, every day I go back to my hostel room, I stare at my cupboard and I keep on thinking कि मुझे क्या करना है, करूँ कि ना करूँ. I have other things to do also, and things got piled up. So I've told her that, it just take 2 minutes. If you'll start doing that, then automatically the thing you feel now it's half done, I should continue it. So next time when she came, she said,
आई वेंट टू द रूम, मैंने पूरा वार्डरोब अपना नीचे निकाल दिया, क्योंकि मुझे तो पता है कि अभी तो आई हैव टू डू इट, राइट? So that 2 minutes, it is only in your control, right? So what we have to do, it is just take 2 minute rule. If you'll push yourself, it will be easy for you, right? And if you'll open your book, obviously, then slowly, gradually, you can help it out. Next is eat the frog. This is a technique called as eat the frog. Now, what is eat the frog? The frog is the most difficult or the important task. For example, if I am studying and stats is very important for me and it's difficult, and the other subjects are very easy for me. If I'll start working on the easy things, that difficult task, that stats will keep on ringing in my head, that oh, I have to do it, I have to do it, I have to do it. That is very important and difficult for me. So what we do, that study the hardest chapter first. It will be easy for you अगर आप उसको पढ़ लोगे पहले. जो frog है, frog for me is the stats. So if I'll study that thing, so it will be easy for me to focus on the other things. Otherwise, if I'll keep on delaying these things, it will be difficult for me to focus on the other things also. The next one is the visual planning. It is very important about the visual planning. What we have to do? Yes, hit the frog first. Yeah, sometimes it is obviously क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा time consuming होती है. At the same point, we have to see कि हमें उसको कितना time देना है. राइट, हमें इस पे बाउंड्री सेट करनी है. लेकिन यही है कि कई बार होता है कि हम वो डिफिकल्ट चीज को करते हैं, हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. हमें वो बाउंड्री सेटिंग करनी है. वो पोमोडोरो टेक्निक लगाओ आप लोग, ठीक है? वो प्रायोरिटी लिस्ट लगाओ उसके ऊपर कि हाँ, आपको कितना करना है. आपको उसी डे वो चीज को कंप्लीट नहीं करना है, बस हमें साथ बाय साथ उस चीज को करते भी रहना है. ठीक है? देन द विजुअल प्लानिंग, यू कैन क्रिएट अ सिंपल बोर्ड टू डू, डूइंग और डन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको अपने पेजेस के ऊपर भी कर सकते हो. लिख लो कि आपने कौन कौन से अपने टास्क करे हैं. टू डू टास्क कौन से हैं, डूइंग में अभी आप कौन से टास्क कर रहे हो, और डन में कौन से हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इज द डन पार्ट, बिकॉज जो टू डू थिंग्स हैं वो आपको एक मेंटल क्लटर से हटाएंगी. जो डूइंग है वो आपको मोटिवेशन देगी कि मुझे ये चीज करनी है. और वो जो डन चीज होगी, जो आप कर चुके होगे, दैट थिंग इज गोइंग टू गिव यू इमेंस सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव डन दैट थिंग. वो टू डू से डूइंग में आई, डूइंग से जाके वो डन में आई. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that psychological satisfaction is there, so you need to work on that. Now you can make in progress or done. It is very easy, you can make it. Then the visual mapping also there, that time management भी अगर आपको करना है तो it is good कि आप लोग अपने flow charts बनाओ. ठीक है? डूडल्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड it is going to help you out in all of these things. Now, the next one is exam preparedness. So what we have to do, first of all, you should be very much known about what kind of what kind of questions we are going to have, right? The same point, प्रैक्टिस, और यू कैन डू द मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि हमने कहा था कि कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यू कैन रीड इट आउट. द लास्ट मिनट रिविजन्स, द क्रैमिंग की जगह अवॉइड क्रैमिंग द थिंग्स. द फ्लो चार्ट्स वी हैव मेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन फ्लो चार्ट्स को फॉलो करें एंड हम लोग करें. एग्जाम डे के ऊपर यू शुड बी स्लीपिंग वेल, you should be eating well. It is very important. And what happens that during the exam, the anxiety is a lot of there. For example, about we are thinking about ki, that guilt that we have not studied well, we should have given more time. What people will say, what marks I'll get, will I be able to score good or not. So that anxiety is there on that day. To how to deal with that, you can do some deep breathing, right? Mindfulness is very important, that whatever you have done, whatever you have prepared, you just need to be mindful.
right? Deep breathing is very helpful there. You must know that how to do deep breathing, right? You just need to inhale and exhale long. You have to breathe, right? So all of these things, this is going to prepare you for your exams. Now sleeping is very important. Now people say that if you are not sleeping well during your exam periods, I know during the exam you cannot sleep for 8 hours, it's okay. In between you can take quick naps, very important. And this is also very helpful during the exams, that you can take small breaks in between. You can sleep, you can take some power naps, right? So preparedness, good preparedness is going to come when you plan well, when you practice, and when there is a pace and confidence and balance. So these things, whatever we have talked throughout the webinar, this is going to prepare you for the responsibilities, for the exams and everything. Now these were the all topics that we have talked about, like how to deal with the real problem, the burnout. Like you have known now that uh, yes, we can share the PPT, right? So these are the all things that what is a burnout. Now you all know that you are on the low risk, you are on the high risk at the same point, or the medium risk, that what kind of risk you're having the burnout. So these were the burnouts. If you feel that you are having these burnouts, it's very important for you to slow down, to give yourself a break. It is very important, right? Now this was it. Now if you're having any questions, you can write it down. We have 10-20 minutes, so if any questions you can ask. Okay, so one question is there that when there is a deadline, so what happens ना कि जब एक डेडलाइन आ जाती है हमारे पास, तब हमें लगता है कि एक अलग सी मोटिवेशन है हमारे पास कि हमें ये चीज करनी है. वी कीप ऑन प्रोकास्टिनेटिंग इट. ना अब आपको आदर्श, आपको इस चीज का ध्यान रखना है. Okay, so many questions. Wait. So the thing is that जो हम लोग इसको डेडलाइन की तरफ पुश करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप इफ यू लुक बैक इन द होल वेबिनार, यू विल गेट टू नो दैट वो प्रोकास्टिनेशन क्यों आता है. बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, वी आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट environment and all of these things, and हम अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते हैं. ठीक है, अभी हमें लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है ड्यूरिंग आवर डेडलाइन इज देयर. यू नीड टू सी कि उसमें आपके बर्न आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ डेडलाइन पे जाके उस चीज को कर रहे हो, आप ये देखो कि कहीं ना कहीं वो बर्नआउट कॉज कर रहा है. वो बर्नआउट जो है आपकी रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है. लाइक यू सी दैट नाउ डेज हेडेक्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अराइजिंग अलॉट. कहीं ना कहीं ये बर्नआउट की वजह से भी है. एग्जर्ट हम इतना ज्यादा अपने आप को कर रहे हैं मेंटली कि जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम आ रही है. तो आदर्श, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप इस चीज को बार बार प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि स्मॉल चंक्स में चीजों को करना शुरू करो. इवन इफ डेडलाइन के पास जाके आप उसको कंप्लीट जरूर करोगे, अगर आप डेडलाइन के पास जाके 90% काम कर रहे हो, तो हमारा सबसे बेसिक चीज होनी चाहिए. हम 100% इसको अचीव नहीं कर सकते, हमें रियलिस्टिक होना है. अगर वो 90% से 50% भी हो रहा है ना, एट दैट टाइम ऑल्सो कहीं ना कहीं हम लोगों को रिलीफ फील हो रहा है. तो इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए स्टार्ट डूइंग थिंग्स एवरी डे. 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, अपने वीकली टारगेट्स को आप जरूर सेट करो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है कि whenever you are studying, you're not able to focus, and इवन इफ आपको जो डांस है वो आपको माइंड उससे फ्रेश होता था, बट अभी भी वो चीज नहीं हो रही है. तो कहीं ना कहीं देखो, एक ये भी चीज है कि वी डोंट हैव टू पुश आवरसेल्व्स.
जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम इफ गार्डनिंग मेक मी फील हैप्पी, हमेशा अगर मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे गार्डनिंग करके अच्छा ही लगेगा। ठीक है, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। अब थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करो बाकी चीजों के ऊपर भी, बिकॉज क्या होता है कि कई बार हमें वही चीजें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती हैं, एंड वी कंपेयर। आप ये देखो कि जब आप बोल रहे हो दैट यू यूज टू लाइक डांसिंग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसी में देती हूँ कि ग्रेजुएशन में एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मैम व्हेन आई वाज इन 10th आई वाज स्कोरिंग सो वेल, अभी मैं अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहा। मैं तो सेम इंसान हूँ, मेरा होम एनवायरनमेंट भी सेम है, पेरेंट्स भी वे सेम है, हर एक चीज सेम है, बट इन 10th ही वाज यू नो 3-4 years यंगर, वो अपने घर पे था, तब सिचुएशंस डिफरेंट थी, अभी सिचुएशंस डिफरेंट हैं। तो क्या जब आपको वो चीज करनी अच्छी लगती थी, आपको रिलैक्स करता था, तब आपकी सिचुएशंस डिफरेंट होंगी, अभी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, है ना? तो सेम चीज नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी अंडरस्टैंड करना है, यू नीड टू फाइंड आउट सम अदर थिंग्स जो आपको बेटर फील करा सकती हैं। वो अपनी आप सिचुएशंस पे जरूर ध्यान रखना कि क्या सिचुएशंस हैं। ओके, एक यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं दैट यू आर सेइंग कि फियर ऑफ फेलिंग द एग्जाम। नाउ जो ये फियर आता है, ये फियर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो हमें चीजें आती है दैट व्हाट पीपल विल से, ये चीज से बहुत ज्यादा आता है, ठीक है? और एग्जाम से पहले जब ये थॉट आता है व्हाट इफ आई नॉट गेट पास इन दिस सब्जेक्ट, तो इस टाइम पे यू नीड टू फोकस दैट हाउ मच यू हैव स्टडीज टिल नाउ, आपका उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते रहोगे दैट व्हाट इफ यू विल फेल इन द एग्जाम्स, राइट, दिस इज गोइंग टू ड्रेन यू a lot and this thing is going to highlight all the time you didn't study, all the time you feel that I was watching stranger things, all the time you will think that okay, my screen time is this much, ठीक है? And you also know, I'll tell you that ask yourself that how much prepared you are. I know that you know in Hindi people say कि हमें पता होता है हम कितने पानी में हैं, ठीक है? समवेयर यू ऑल्सो नो दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, बट ये एक फियर आ जाता है मन के अंदर दैट व्हाट माइट पीपल से। ये मिथ भी आती है इसके अंदर, जब हमने मिथ्स में बात करी है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे मन में। आप कभी भी देखना कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सेइंग दैट व्हेन एवर वी आर fearing समथिंग, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू दैट इन द पास्ट, है ना? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इसको जरूर फीड कर रहा होगा बिकॉज आवर ब्रेन इज नॉट एबल टू मेक समथिंग नेगेटिव आउट ऑफ इट, उस चीज का हमेशा कुछ ना कुछ इन द पास्ट देर देर मस्ट बी समथिंग जिस चीज को हमें ध्यान में रखना है, राइट? आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। ओके, सो आयुषी लाइक यू आर सेइंग दैट आपने हर एक चीज ट्राई करी है, आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, नॉट अ सिंगल डे यू हैव फेल्ट एनर्जेटिक। सो आई जस्ट से दैट कहीं ना कहीं टेक अ डे ऑफ, डू नथिंग, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली आई वाज सीइंग सम वीडियो, उसमें कहा था कि व्हेन वी हैव टू टेक अ डे ऑफ और हम लोग घूमने जाते हैं तो वी आर जस्ट रशिंग ऑल द टाइम, इधर जाना है उधर जाना है, and जब हम वापस आते हैं तो हम और ज्यादा थका हुआ फील कर रहे होते हैं। तो somebody said that it is a very it is very important for us to go on a break and do nothing, ठीक है? एंड उस नथिंग के बीच में यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जैसे अगर आप पेंटिंग भी कर रहे हो, जस्ट टेल मी आयुषी, जब भी कभी आप पेंटिंग कर रहे होते हो या फिर वॉक कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, क्या ऐसा होता है दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस टाइम्स के पहले क्या करा और आगे क्या करना है, मतलब पास्ट और फ्यूचर के बीच में जगल करते रहते हो हमेशा? कि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो यू आर जस्ट डूइंग गार्डनिंग, और यू आर थिंकिंग अबाउट जो चीजें हो गई हैं या जो करने वाली हैं? डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एवरी टाइम? दैट इज वाई
यही हमें करना है। जैसे कि अगर पहले जो चीजें हैं उनके बारे में हमें नहीं सोचना है, जो हमने मेंटल फटीग के बारे में कहा था, वो एक आर हमें लेना है और उसमें हमें कहना है कि वी विल नॉट थिंक अबाउट द प्रीवियस थिंग्स। एट द सेम पॉइंट हमें जब आगे का भी है हमें उसके बारे में भी नहीं सोचना है। यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल। every day give yourself 10 minutes to 30 minutes जिसमें you are just spending that time for your own self। इवन if वो हाफ एन आवर लेके ना आप ट्यूबलाइट को भी देखोगे ना, आप दीवार को भी देखोगे, तो यू विल फील सम रिलैक्सेशन। ठीक है, जस्ट यू नीड टू डेडिकेट दैट हाफ एन आवर टू योर ओन नेम। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है कि 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक आई एम ओनली आयुषी। मैं कहीं जॉब नहीं कर रही, मैंने अभी आके कहीं कोई घर का काम नहीं करना, नहीं पढ़ना। इट्स जस्ट मी टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज मी टाइम, जहाँ पे द ओनली रिलेशनशिप यू हैव इज विद योर ओन सेल्फ। ठीक है, आप इस चीज को ट्राई करके देखिए आपको कैसा फील होता है। नेक्स्ट, अर्पिता इज सेइंग दैट यू हैव अ 1 month old baby, हाउ कैन आई मैनेज माई एग्जाम। ओके, आई नो कि ये थोड़ा सा आपके लिए भी चैलेंजिंग होगा, यू नो, बिकमिंग अ न्यू मदर। बट जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि स्मॉल चंक्स में अगर हमें पढ़ना है, बिकॉज इस टाइम पे आपके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिकॉज द बेबी इज डिपेंडेंट अपॉन यू एंड यू नो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। जो स्मॉल चंक्स हैं आप उसके बीच में जरूर अपना पढ़िए। जैसे कि अगर आपका बेबी है, वो कभी सो रहा है 15 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए, एट दैट टाइम यूटिलाइज दैट टाइम, है ना। एवरी टाइम बच्चा सो रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करिए। अपने आप को कभी सोचिए कि अच्छा इस टाइम अगर बेबी सो रहा है तो आई रिलैक्स माई सेल्फ। नेक्स्ट टाइम व्हेन द बेबी विल स्लीप और बेबी किसी और के पास अगर है, एट दैट टाइम मैं वो स्मॉल स्मॉल चंक्स में पढ़ूंगी। वो जो पोमोडोरो टेक्निक है वो फॉलो कर सकते हैं कि आप 30 मिनट्स पढ़ रहे हैं, आप हाफ एन आवर 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 मिनट्स पढ़ रहे हैं, आफ्टर दैट टाइम 10 मिनट्स यू आर अटेंडिंग द बेबी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। राइट, एट द सेम पॉइंट धीरे धीरे आपको इन चीजों में आपको वो स्मॉल चंक्स में आप पढ़ सकते हो। राइट, ओके, ओके, एनी अदर क्वेश्चन। So that's the thing. Even if you try taking a day off and doing nothing, ठीक है, at night you will think that you have done nothing. तो वही चीज है कि हमें वो मेंटल फटीग के बारे में हमें जानना है, that what we were doing before that, एक दिन पहले क्या करा है, and if you feel कि अभी आगे का भी करना है तो you will feel this। ठीक है, सो सचिन व्हाट यू हैव टू डू, वो जो गिल्ट इसी से आता है, बिकॉज यू आर अवॉइडिंग सर्टन थिंग्स। आपको लग रहा है कि आप अगर खुद को पुश करोगे, यू डोंट हैव टू पुश योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर ओन सेल्फ कि किस दिन आपको लग रहा है कि ओके आई विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, यू कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ कि यार आज मैंने छुट्टी ली है, आज मैंने छुट्टी ली है काम से। तो जब हम ये भी खुद के ऊपर प्रेशर पुट करते रहते हैं ना, उससे भी हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं यू डोंट हैव टू पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। ठीक है, और वो जो गिल्ट है वो नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ही लगता है कि जब हमने डे ऑफ भी ले लिया, हमने कुछ भी नहीं किया, और रात को बैठ के हम फिर से रिव्यू कर रहे हैं पूरा दिन, इसलिए भी हमें गिल्ट फील होता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। End of this enriching masterclass, I would like to express my heartfelt gratitude to Ms. Damini Tiwari for delivering such an insightful and impactful session. The practical strategies, emotional well-being tips, and balanced study techniques shared today have undoubtedly given all of our learners, and even to me also, with a very fresh perspective on how to prepare effectively for day-to-day life or exams without compromising our mental health. So, ma'am, your guidance has helped our learners understand that exam preparedness is not just about hard work. It's about smart planning, emotional balance, and consistent habits.
So thank you so much for inspiring our students to approach their studies with clarity, confidence, and positivity. I also extend my sincere appreciation to all the participants for your active engagement. I could see how engaging this session was, and that talks of the success of today's session. So the questions and the enthusiasm throughout the session and the willingness of the learners to learn and grow truly made it masterclass really meaningful for today's masterclass. So we hope that the insights gained today will support all of us in achieving not just academic success, but also our personal balance and well-being in days ahead. As I could see, there are a number of people, number of participants who asked about their day-to-day personal life, managing with kids and managing with day-to-day challenges of our life. So, and ma'am has very wonderfully guided you on how those challenges to be taken. So, thank you once again for being such a wonderful audience, and thank you, ma'am, for such a wonderful session. And wishing all our learners very best for your upcoming examinations and all your future endeavors. May you have a great day ahead. And with this, we come to the conclusion of today's session. Thank you so much, Damini ma'am, for this very impactful session that you have given. And thank you all our learners for being so participative in today's session. Thank you so much. Thank you.